Hi everyone, my name is Ritika Goswami and welcome back to another video. In today's video, I'm going to be talking about the molecular orbital theory. So without wasting any time, let's get started. Okay. Everybody knows what a hydrogen atom is and इसकी electronic configuration होती है 1s1 which means it is having an s orbital जहाँ पे एक electron lie कर रहा है, ठीक है? This s orbital is spherical in nature, in shape, not in nature, in shape, and this s orbital is called your atomic orbital, ठीक है? वेरी इजी बिकॉज हाइड्रोजन एक एटम है तो उसके ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल ही बोलेंगे, है ना? नो रॉकेट साइंस देयर. सो ओके, क्लियर. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली पार्ट हैं इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है? बिकॉज एक बॉन्ड बन चुका है अब, राइट? सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, द अदर इज ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, बट नाउ ये दोनों के दोनों इन दोनों का पार्ट है ना? सो नाउ सिंस अ बॉन्ड इज फॉर्म नाउ, so now we cannot say that these two electrons are part of the first hydrogen atom or the second hydrogen atom. Okay, now we say that these two electrons are a part of the molecular orbital of your hydrogen molecule, ठीक है? बिकॉज अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका है. सो इट्स वेरी क्लियर व्हाट आई वांट टू से दैट जब भी एटम्स होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, बट व्हेन बॉन्डिंग हैपेंस, right, so in that case your bonds are formed and now the electrons are present into the molecular orbitals of the resulting molecule. Clear? Okay, so before moving ahead we should be very clear with the fact that why are even bonds formed. H2 ने bond क्यों बनाया, ठीक है? H अकेला क्यों नहीं था? So generally the answer that we get is because duplet complete हो रही थी या octet complete हो रही थी, that's why the bond is formed. No, we do not say the okay, this is something which is not a necessity. This is, if this is happening it's great, but this is not why a bond is formed. Bond हमेशा तभी बनेगा whenever there is going to be a reduce or reduction in the energy of the system, ठीक है? which basically means stability. तो हमेशा जब भी कोई चीज़ हो रही होती है इस वर्ल्ड में, एनी थिंग फॉर दैट मैटर, इज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ऑलवेज स्टेबिलिटी एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो बॉन्ड बनने का रीज़न भी स्टेबिलिटी है और कुछ भी नहीं. जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट इज़ वाई एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि सिस्टम के पास खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, विच विल बेसिकली लीड टू स्टेबिलिटी एंड दैट्स ऑल. क्लियर? ओके, बिफोर मूविंग अहेड वी शुड नो व्हाट एन ऑर्बिटल इज. नाउ ऑर्बिटल एवरीबडी नोज. इसकी definition, if I'm going to study anywhere, if you know open Google or any book for that matter, you will find one definition that orbital or atomic orbital, ठीक है, atomic orbital is nothing but an area around your nucleus or space around the nucleus. Basically space होता है, area नहीं होता. Space around the nucleus where there is maximum probability of finding your electron, ठीक है? Whenever we talk about the position of the electron, we do not talk with certainty because we cannot. Certainty से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात नहीं कर सकते हैं because we know about the Heisenberg uncertainty principle. So we always talk in terms of probability, ठीक है? बट अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स ठीक से पढ़ी है तो हमें ये भी पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज नथिंग बट जस्ट वेव फंक्शन, ठीक है? जो कि solution of the Schrodinger wave equation है. I'm not going to into that detail, but wave function है और कुछ नहीं, ठीक है? So और wave function मतलब it is kind of like a wave. अब wave है मतलब उसमें crest होंगे, trough होंगे. ये होता है crest, ये होता है trough, और हम उसको positive negative से इसलिए represent करते हैं because ये phases हैं. They are nothing but the phases of the wave. Clear? So when two waves are combining, ठीक है, and they are in the same phase, as you can see यहाँ पे crest है and the crest is combining with the crest, the trough is combining with the trough, ठीक है? We get a new wave which is having a higher amplitude in comparison to the ones which are participating, ठीक है? And this is called a constructive interference. Constructive interference, ठीक है? क्योंकि we get a new wave which is having a higher amplitude, ठीक है?
ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे दो वेव्स कंबाइन कर रहे हैं जो कि ऑपोजिट फेज में है, in that case we get a new wave which is having a lesser amplitude in comparison to that of the combining ones, and this is called your destructive interference. ये भी चीज़ है, this is also something which we should know about before starting with the MOT, molecular orbital theory. ठीक है, all right. So having all this prerequisite knowledge, we will start with your molecular orbital theory. Let's begin. Okay, so the major rule or the most important rule that we should always remember about the MOT is that number of combining atomic orbitals must be equal to number of formed molecular orbitals. ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक रूल है जो हमेशा याद रखना है हमें, एंड वी विल सी व्हाई दिस रूल इज देयर इन अ व्हाइल, बट ये रूल हमेशा याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स से आई एम गोइंग टू कंबाइनिंग 2s ऑर्बिटल्स टुगेदर. ठीक है, सबसे पहली बात तो याद रखो कि s ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रही हैं वो वेव फंक्शंस हैं. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इफ 2s ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू कंबाइन there are going to be two molecular orbitals that are going to be formed. ठीक है, ऐसा नहीं कि दो s कंबाइन हुए और एक बड़ा सा molecular orbital बन गया. No, the rule basically says कि number of atomic orbitals combining should be always equal to number of the formed atomic orbitals. Clear? तो अब वो दो कैसे बनेंगे? Let's see. ये जो दो s orbitals हैं, as I already said कि ये हमारे क्या हैं? ये हमारे wave functions हैं. ठीक है, so the first case is when these two are in the same phase. ठीक है, and the second case can be when they are not in the same phase. Clear? So when they are in the same phase, then what happens? Let's see. ये हमारे दोनों न्यूक्लियस हैं और हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कोलिजन हो रही है, और जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड, है ना. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो हमारे दो न्यूक्लियस हैं, एंड बिकॉज टू waves are combining or two atomic orbitals are combining in the same phase, we are going to get a molecular orbital which will be having an even higher probability of finding the shared pair of electron. And this orbital, my friend, which is formed by the combination of two atomic orbitals in the same phase, ठीक है, is called your bonding molecular orbital. Okay, please excuse the dog which is actually barking behind me because it's late and dogs do that. Okay, so this is a bonding molecular orbital, and the two electrons are going to lie into this two electrons, which is the जो because a bond basically means two electrons, है ना. So the two electrons which are the bonded pair is going to be present in this bonding molecular orbital. ठीक है, और क्योंकि this is a sigma collision because it is happening onto the internuclear axis, it's called the sigma bond. Clear? Okay. The other case is that when these two are not in the same phase, then what happens? Then what happens is nothing but बनना तो क्या चाहिए था? Single bond बनना चाहिए था. ठीक है, तो sigma तो है ही है, right? But since they are in the same phase, they are not going to combine, and this kind of repulsive action is happening. अब repulsion से ये मत समझना कि positive और negative sign आपस में repel कर रहे हैं, because in principle positive and negative should attract, है ना. But ये actually sign नहीं है, ये ionic signs नहीं है, they are nothing but phases. That is why they will not interact or they will not bond. Okay, and we get a node kind of a structure in between like this. Okay, ये आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे, and we get an anti-bonding molecular orbital which is the sigma star or ABMO. ठीक है, so when there is a combination of two s orbitals, then we get two molecular orbitals. One is called the bonding, in which the bonded electrons are going to lie, and the other is called the anti-bonding, where the two electrons are not going to lie. ठीक है, is it clear? So also understand that a bonding molecular orbital is the space where the bonded pair is going to stay. ठीक है, and मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, bond तब बनता है जब energy only when the stability is caused or the energy is reduced. ठीक है, तो इसलिए हमेशा bonding molecular orbital की energy कम होगी in comparison to the anti-bonding molecular orbital, क्योंकि इसके अंदर bond बनता है. बॉन्ड इसकी वजह से बनता है, इसके अंदर बॉन्डेड पेयर लाई करेगा. दैट इज़ वाई द एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द टू p ऑर्बिटल्स कंबाइन. ठीक है,
So when the two p orbitals are combining, this is, let's say they are in the same phase first, ठीक है. अब ये भी हमारा head on collision हो रहा है because it is on to the internuclear axis, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है. But the other case can be कि जब हमारा they are not in the same phase, ठीक है. So when they are in the same phase, so what happens is the two positives will be interacting like this, okay, and we get something this kind of a structure, ठीक है. This is your sigma, which is your bonding molecular orbital where your bonded pair is going to lie, ठीक है. This will have the lower energy and higher stability, ठीक है. On the other hand, this is your एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सो इट इज सिग्मा स्टार, ठीक है. एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज योर ABM, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है. सिग्मा क्यों लगाया? बिकॉज हेड ऑन कोलिजन है तो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था, बट एक्चुअली इट इज़ द एंटी बॉन्डिंग वन, तो सिग्मा स्टार है. ऊपर वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर, बिकॉज इट इज़ हेड ऑन इंटरैक्शन. ऑल राइट, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिग्मा, लेट अस टॉक अबाउट द पाई. अगर हमारे पाई ऑर्बिटल्स और योर p ऑर्बिटल्स आर इंटरैक्टिंग साइडवेज, ठीक है, बट it can be either in the same phase or it can be in the opposite phase like this, okay, positive positive negative negative. So when they are in the same phase like this, in that case ये हमारे न्यूक्लियस है और हमारा अब साइडवेज इंटरैक्शन होगा, अब हमारा हेड ऑन नहीं है. सो इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. ऊपर के दो लोब्स विल इंटरैक्ट, नीचे के दो लोब्स विल इंटरैक्ट एंड वी गेट अ नोड हियर इन बिटवीन, ठीक है. तो ये हमारा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट क्योंकि ये पाई है तो हमारा ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है. एंड दिस इज बॉन्डिंग, तो यहाँ पे हमारा जो भी पाई के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आर गोइंग टू लाई हियर, राइट. whereas the other case is कि हमारे ये the collision is happening out of phase. So in this case what happens is they are going to be repelling each other like this, okay, and we get a node in a different plane here, and this is also pi. This should have been pi, but it is anti-bonding, so it is pi star, ठीक है. And this is ABM or anti-bonding molecular orbital, clear. So this is, so basically we know now कि जब भी दो ऑर्बिटल, so अभी तो मैंने दो ऑर्बिटल का इंटरैक्शन पढ़ा है. So जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं, we get two molecular orbitals because it's the rule, right. वन इज़ बॉन्डिंग, वन इज़ एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग के अंदर हमारे बॉन्डेड पेयर लाई करेंगे और एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमारे बॉन्डेड पेयर लाई नहीं करेंगे, क्लियर. बॉन्डिंग के अंदर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे हमारी सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होगी क्योंकि बॉन्ड बनेगा, ठीक है. बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब बॉन्ड बनना, और जब बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होती है, स्टेबिलिटी कॉज होती है. और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, एंड कोई भी ये नहीं चाहता कि सिस्टम की एनर्जी बढ़े, इसीलिए कभी भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ठीक है. सो नाउ वी नो व्हाट इज़ बॉन्डिंग, वी नो व्हाट इज़ एंटी बॉन्डिंग, व्हाट इज़ नॉन बॉन्डिंग, ठीक है. नॉन बॉन्डिंग क्या होता है? देखो, नॉन बॉन्डिंग वो होता है जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है. जोक्स अपार्ट, नॉन बॉन्डिंग वो होता है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनर्जी से, ठीक है. एज आई सेड, बॉन्डिंग जो है उसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर देगा सिस्टम की. एंटी बॉन्डिंग जो है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो एनर्जी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज़ कर देगा. नॉन बॉन्डिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नॉन बॉन्डिंग विल नॉट कॉज एनी चेंज इन एनर्जी व्हाट्सोएवर, और इसलिए मोस्टली नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, क्योंकि लोन पेयर्स आर नॉट गोइंग टू चेंज in some reaction we study that lone pairs are going to stay where they are, ठीक है. and that is why your lone pairs are going to be present in the non bonding atomic or molecular orbitals. is that clear? okay, so एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा, ठीक है. दुनिया में हम लोग सब पढ़ते आए हैं, वी ऑल नो व्हाट इज़ एन SN2 रिएक्शन, ठीक है. SN2 रिएक्शन में वी यूज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड बैक साइड अटैक. पढ़ते हैं ना, आई थिंक पढ़ा है सबने बैक साइड अटैक को. सो ये बैक साइड अटैक क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा H होता है, दिस इज़ मॉलिक्यूल वेयर अटैक इज़ गोइंग टू हैपन. ये हमारा OH माइनस है, एंड वी से कि बैक साइड अटैक होता है एंड Cl माइनस बाहर निकल जाता है एक ही स्टेप में, एंड वी गेट अ न्यू स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है. एंड विच इज़ हैविंग रिवर्स ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ समथिंग आगे जाके पढ़ेंगे. बट हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स? एक्चुअली क्या होता है, ये हवा में इंटरैक्ट नहीं कर रहा होता कार्बन के साथ. कार्बन की ये जो Cl के साथ बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हमारे ऑफकोर्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्लियर. वेयर एज कार्बन का एंटी बॉन्डिंग तो खाली पड़ा है यहाँ पे,
right? So this OH minus or the nucleophile is going to interact with the anti-bonding molecular orbital. तो ये जो backside attack है ना, this is nothing but just the interaction with the anti-bonding molecular orbital of the carbon and nothing else. ठीक है? So this is what backside attack जो तुम पढ़ते आए हो actually is nothing but the attack in the anti-bonding molecular orbital, and that is why studying and the knowledge of bonding, anti-bonding, non-bonding is really important. Because we understand a lot of things about the stereochemistry and a lot of things basically with the help of these terms, okay, and the meanings of them. So in the next video I will talk about the molecular orbital energy diagrams. Uske liye this video is very very important, so that's why I made this before the other one. And if you have any doubts whatsoever, you can comment down below and I will try to answer them there and then. So thank you so much for watching if you have been watching as of now. So stay tuned for more.